So let's discuss about some key terms. Okay, so key terms with a count region. It's not only for AWS but also for all service provider, all cloud service provider. যেকোন সে cloud service provider ଆମେ ଚାହିଁବା ଆମେ এটা यूज କରିପାରିବା। এটা ଆମକୁ ନିହାତି ଦରକାର cloud computing ରେ। region ମାନେ କଣ? In AWS, region is a physical location around the world. Region is a physical locations. माने देखो जदि कहबे आमे समस्त एक्चुअली कोन, we all are belongs to Odisha, right? आमे समस्त ओडिसा रो ही अच्छे, but ओडिसा रा को region, को location, right? सेटा स्पेसिफिकली देखियो पड़ी ओडिसा रो जेमते हम 30 districts अच्छी, right? But yeah, 30 districts are there. So आ भितर हमें को district समस्त को region रो आसीचे, right? तो हमर physical location हला सेठी, but we are see virtually connected. We are virtually connected, right? Even Swaroop is staying out of state, right? Maybe in Mumbai, and Subhasri in Bhubaneswar, Matru in Jagatsinghpur, some, and Anupam, I think Sachin from Bangalore, Anupam somewhere, but we are still connected virtually in this classroom, right? But region कौन? आम region कौन ला? जोटा कि उड़े physical location, जोटी actually आमे रोचे, right? So आमर data center, आमर computer, कोटे उड़े physical location रे रही थी वो, जोटा कि आमे connect करूचे, right? तो सेटा आमर region ही जीवो। So in AWS, region is a physical location around the world where they keep the group of data centers. Data center ऊपर बुझे data center कौन? Okay, group of data center. एटा माने रखिदा जो key terms गुरा मु तुमको कहूची एटा बहुत बहुत important. खाली AWS नु जे कोन सी cloud सिखिबे सब निहाती दरकार तुमको। ठीक है जी। And each region consists of multiple isolated and physically separated availability zone. एडी हमें केतरा terms सिखले? Region गोटे terms जानछे, region विषय रे सिखुचे, तापर हम data center जानबे data center कोन, then multiple isolated and physically separated availability zones. Availability zones कौन जानेगा? कौन कहना first time? Region is a physical location around the world where they keep their group of data centers. Simple. And each region, प्रत्येक region, consists of multiple isolated, physically separated availability zone. Okay, multiple availability zone, isolated and physically separate, अलग अलग isolate हेकरी सब availability zones अच्छी। देखना बोले AWS 25 regions around the world, कितना regions? 25 regions till now, and 6 more are going to open shortly. So total 31 regions they are going to start. 32 regions all over the world AWS has their data centers. AWS has their data center. Okay, बुझी पड़लो? Region कौन? is a physical locative or physical locations around the world where the data centers are available. Simple, right? So next बुझी availability zone कौन? What is availability zone? Okay, ये जो diagram हमें देखुची particular diagram, इटा ला suppose कौन? Region. Complete है ला region. आ भीतर हमर सब availability zone but data centers we can see it here, right? Data centers we can see there. So availability zones कौन? Availability zones are distinct isolated locations within an AWS region. Within an AWS region, availability zones are isolated locations, right? तो इथे हमें देखिए यदि गोटे region हमें नेइचे, एटी तीनटा availability zone suppose अच्छी separated हेगी, AG1, AG2, AG3. जदि हमें ओडिसा को गोटे region धरिबा, okay, let's imagine, okay, let's imagine
ओडिशा होची गोटे रीजन ए रीजन रे भुवनेश्वर होची गोटे जगह जोठी कि हमर डाटा सेंटर रहउची अवेलेबिलिटी जोन कटक रे गोटे अवेलेबिलिटी जोन रहउची सपोज ब्रह्मपुर रे गोटे अवेलेबिलिटी जोन रहउची सपोज भुवनेश्वर कटक बहुत पाखा पाखी हे गला तो एटा छाडी दियो संबलपुर रे गोटे अवेलेबिलिटी जोन गोटे ब्रह्मपुर रे रहला गोटे कोन भुवनेश्वर रे रहला तो कोन हे गला जो बड़ रीजन ता हमर रहला रीजन रे हम तीनटा अवेलेबिलिटी जोन रखि देले वन इन बीबीएसआर another suppose in Sambalpur, right? Sambalpur, suppose another one in Berhampur, right? All three regions. But basically AWS Odisha रे किसी region नहीं ମୁଁ just ଗୋଟେ example ଦଉଛି okay ତ ଆମେ region କୋଉଠି इंडिया रे कोठी अछि okay availability region बा region केतेटा अछि सेटा ଆମେ देखिबा इंडिया रे एक्चुअली दुईटा रीजन अछि गोटे अछि कोन आमची मुंबई गोटे अछि मुंबई रे आ गोटे अछि हैदराबाद रे ठीक अछि ओइ दुईटा रीजन अछि इंडिया ता विषय हम डिस्कशन करिया बस बतै दउछि मु ओडिसा रे गोटे एग्जांपल नउछि बट ओडिसा रे कोनसी रीजन बा कोनसी अवेलेबिलिटी जो नाही ठीक अछि so कौन कहला availability zones are distinct isolated locations within an AWS region there are 80 availability zones currently AWS has केतरा अछि total 80 टा availability zones okay one availability zone have इस point मन रखिताओ one availability zone may have one or multiple data center one availability zone may have one or multiple data center. This AZ offers us the ability to operate production applications and databases that are more highly available, fault tolerant, and scalable. Highly available, fault tolerant, and scalable. कौन कहेगा? One availability zone have one or more data center. ये जो availability zone गोटा में suppose VBS रे देखले एठी मुझे एठी it can have one or two or three data centers. तो data center कौन? Next slide हम बुझिबा. This AG a availability zone रो short form मन रखो AG. Okay? AG availability zone. AZ offers us the ability to operate production applications and databases that are more highly available, fault tolerant and scalable. ये जो words सब highly available माने कौन fault tolerant कौन और scalable कौन आ विषय में पूछिबा ठीक अछि हमें डिटेल्स अपकमिंग स्लाइड रे नेक्स्ट क्लास रे हमें अवेलेबिलिटी हाई अवेलेबिलिटी विषय जानिबा fault tolerant विषय जानिबा scalable विषय जानिबा ठीक अछि data center हम जानिले कोन availability zone may have one or more data center right so कोन data center हमें देखि दिया बेसिकली जो माने भी कंपनी काम करछ तुम सर्वर रूम को जो कंपनी सर्वर रूम को जे कोन से गोटे सर्वर रूम को कोठी की भी जाओ राइट गोटे सर्वर रूम रे देखियो बहुत सारा कोन सिस्टम बा हार्डवेयर सब थिबो तो केबल सब कनेक्टेड हेतिबो तादर कंप्यूटर्स लागिथिबो राइट तब हमें नॉर्मली डाटा सेंटर को जोटी कि हम कंप्लीट सर्वर सेटअप हेतिबो राइट सो ए डाटा सेंटर इज फैसिलिटी a dedicated space within a building or a group of building composed of networked computers and storage that businesses and organizations use to organize, process, store and disseminate large amount of data. तो जोटी हमर ग्रुप ऑफ कंप्यूटर्स थिबो स्टोरेज सिस्टम थिबो मेमोरी थिबो नेटवर्क कनेक्टेड हेतिबो आउ सब जग हमर डेटा स्टोरेज हेतिबो बेसिकली गोटे कंपनी रो वैल्यूएबल थिंग्स कोन डेटा तो से डेटा को सब बळे हमें केमती स्टोर करके रखिबा नॉर्मली सब कंपनी दे would have their own data center physical data center से माने सेफली स्टोर कर तो ये जो डेटा सेंटर को आमे चाहिले आम इंफ्रास्ट्रक्चर बा गोटे बिल्डिंग नै कि आमे निजे सर्वर किनि कि बसई परिबा
तो सेटा है कोन हिजबा हमर ऑन प्रीमाइसेस आम ऑन प्रीमाइसेस माने आमे निजे आमे ऑन प्रीमाइसेस फिजिकल सेटअप डाटा सेंटर आमे करछे बट ए जो डाटा सेंटर को जदी आमे थ्रू इंटरनेट कनेक्ट करिवा इंटरनेट द्वारा एटा को कनेक्ट करिवा तो आम पई एटा कोन हिजबो सर्विस क्लाउड सर्विस हिजबो राइट जदी हमें इंटरनेट टे करी तो AWS कोन करछि AWS बहुत सारा डाटा सेंटर खोली देछि अमेजन कोन करछि बहुत सारा डाटा सेंटर खोल देछि अराउंड द वर्ल्ड जेमति हमें देखिले 31 रीजन्स 31 टा रीजन रे तार डाटा सेंटर से खोल देछि तो हमें से डाटा सेंटर रे गोटे जगार गोटे डाटा सेंटर को कनेक्ट करछे गोटे सर्वर नौचे से सर्वर टा सपोज हमें यूएस रीजन रु गोटे डाटाबेस नेले बा गोटे सर्वर नेले तो आम पई आम सिस्टम टा कोठी अछि फिजिकली एक्चुअली इट इज लोकेटेड इन यूएसए आमे कनेक्ट करछे को ओडिसा रु आम पई सेटा हेगला वर्चुअली कनेक्टेड रिसोर्सेस तो ताको हमें क्लाउड सर्विस कहिबा सिंपल बुझी पालो राइट ओके एटा जदि हम सिंपल देखिबा गोटे फुल रीजन सपोज हमर एटा रीजन टा हमर ओके सपोज ए रीजन टा हमर मुंबई रीजन ओके मुंबई रीजन रे हमर अवेलेबिलिटी जोन जो ग्रीन कलर टा हम देखुछे सपोज अवेलेबिलिटी जोन suppose one is in अंधेरी the na diya Mumbai but will get in every field of Maharashtra je kon si jaga re rakhithi maybe availability zone koche to eta achi suppose Navi Mumbai ye availability zone hala Navi Mumbai suppose आ गोटे हला suppose कौन बोरीवली मुझे कि ना जान कही देली बोरीवली और केते छी बोरीवली शायद जाई हो तो कौन है हमर जो अवेलेबिलिटी जोन रहिला तो ए अवेलेबिलिटी जोन जो सपोज अंधेरी रे अछि रीजन हमर हला मुंबई राइट अंधेरी रे अछि तो अंधेरी रे कोन होछि ना हमर केतरा अछि इटा हम कोन कहबा डेटा सेंटर राइट ये जो स्मॉल बॉक्स डेटा सेंटर हमर डेटा सेंटर जोटी कि हमर सब हार्डवेयर कंप्यूटर्स नेटवर्क सब थिबो तो ये अवेलेबिलिटी जोन रे हमर सपोज केतरा हैला एठी अछि दुईटा 1 2 एठी भी 1 2 एठी अछि 1 2 3 4 चारटा डाटा सेंटर नावी मुंबई रे हमर चारटा डेटा सेंटर अछि राइट देन अंधेरी रे दुईटा बोरीवली रे दुईटा राइट तो डाटा सेंटर तो बेसिकली टोटल जदि हमें काउंट कर दवा मुंबई रीजन रे केतरा डाटा सेंटर 8टा डाटा सेंटर अछि बट इन 3 अवेलेबिलिटी जोन रे तो स्पेसिफिकली एटा आइसोलेटेड काहे की रखा जाय ता पछरे गोटे बहुत बिग रीजन अछि जेटा कि म तुमको एक्सप्लेन कर देबी ठीक अछि काहे की याकू आइसोलेटेड सेपरेट करा जाय सेठी हमर आसुची हाई अवेलेबिलिटी फॉल्ट टॉलरेंट ओके हाई अवेलेबिलिटी शॉर्ट टर्म बुझे दोची सपोज हम एप्लीकेशन हमें एप्लीकेशन सपोज मु एठी रखिची अंधेरी रे आ गुड एप्लीकेशन सही सेम एप्लीकेशंस आई एम आल्सो होस्टेड आई हैव आल्सो होस्टेड हियर इन नेवी मुंबई सपोज आई तो कौन हला जदि इन केस ड्यू टू सम डिजास्टर अंधेरी डाटा सेंटर डाउन हो गला फ्लड आसला बा अर्थक्वेक आसला किछ भी आसला तो डाउन हो गला तो मो एप्लीकेशन कौन
जदि मु एठी न रखिथि मो एप्लिकेशन कोन एक्सेस हबनी कोडी अंधेरी रे बट इट इज स्टिल देयर इन नेवी मुंबई जदि मोर अंधेरी रो availability zone down हो गला but data center is out of control but it's down then we can still have access to our another application which the same applications which is hosted in another availability zone. So customer will not impacted, they can still access your application. जदि तमे एठी application रखिनो तो कौन है तम application down हो जिवो customer access करि परिबनी, you will get lots of loss, right? तो एठी reputations will get damaged. तो एठी हमें high availability concept use करूचे सेति पई गोटे रीजन रे मल्टीपल अवेलेबिलिटी जोन बा मल्टीपल डाटा सेंटर करिकरी आइसोलेटेड वेज रे सेपरेटली से माने रखि थांती जदि गोटे डाटा सेंटर ब्रेक होची then we will have another data center which can serve the purposes. बुझी पारलो सेति पे ताकू हाई अवेलेबिलिटी कोड अछि बुझी पारलो हाई availability. Good. Next, edge location. So what is edge location? The edge location actually RB तमे daily use करूछ actually. Edge location तमे daily use करूछ but मैं तुमको बुझे देल तमे जानि परियो कोन तमे use करूछ right? आउ से कोन actually. तो a site that cloud front এটা भी गोटे सर्विस cloud front आ विषय हम पढ़े बुझिबा a site that cloud front uses to cache copies of your content for faster delivery to users at any location. Remember edge locations means this is a site which the cloud front is one of the service AWS service, okay, which uses to cache copies of your content for faster delivery to users at any location. There are currently 17 CloudFront edge locations in India. India re ketara achi total 17 ta achi. 4 ta Hyderabad re, 4 in Hyderabad, another 4 in New Delhi, 3 in Bangalore and 3 in Mumbai, 2 in Chennai, 1 in Kolkata. तो आमे कहबा त आमे तो जानले दुईटा रीजन अछि इंडिया रे बट एठी कोन कहूची सबु जगह रे गोट चारटा तीनटा बेंगलोर रे अछि दिल्ली रे अछि कोलकाता रे अछि मु कोन कहली हमरा रीजन अछि दुईटा जोटा केला गोटे मुंबई आ गोटे हला हैदराबाद राइट ए दुईटा रे हमरा कोन हला रीजन अछि दुईटा रीजन हमरा इंडिया रे AWS regions but तर एज लोकेशन कोन करछि से हैदराबाद रे चारटा रखिछि आउ चारटा न्यू दिल्ली रे रखिछि तीनटा बेंगलोर रे अछि मुंबई रे तीनटा चेन्नई रे दीटा कोलकाता रे कोटे काहे केटा रखिछि तार डिटेल्स हमको बुझे देबी ठीक अछि फर्स्ट एज लोकेशन हमें जानिले कोन पई इट इज अ साइट वेयर CloudFront uses to cache copies of your content for faster delivery. I mean, cache copies of your content for faster delivery to the users at any locations. Okay. Now let's see this diagram. Got a region etala, right? One region. Another sub region. Alga region. It alga users sub achanti. So suppose a user. It is suppose user Odisha रे अछि ये यूजर सपोज चेन्नई रे अछि ये यूजर दिल्ली रे अछि ये यूजर सपोज केरला रे अछि केरला ओके गॉट इट नाउ तो कोन हबो ए माने सब ए रीजन रहि बट हमर सर्वर कोड अछि ए पर्टिकुलर सपोज एठी अछि
सपोज एटा हला ऑस्ट्रेलिया ऑस्ट्रेलिया हम सर्वर रहिला ऑस्ट्रेलिया रे ओके एटी हमर सर्वर रहिला ऑस्ट्रेलिया रे तो मु चाहूची मु जो कंटेंट गोटे सपोज गोटे मूवी देखुची मूवीटा अच्छी एटी बा गोटे कंटेंट पढ़िया चाहूची सर्वर रु कंटेंट आसीबो तो सर्वर रु कंटेंट आसीबो कोडी ए रीजन रे रहिला तो मु ओडिसा रे ताई कि जतले कंटेंट देखिबी जदी मोर किछि कॉपीज कासे नथिबो बा कोनसी कॉपी मोर लोकल नथिबो से कोन करिवो ना एटी कनेक्ट करिवो ए कंटेंट को रीड करिवो तो ये जो कनेक्शंस फ्रॉम ओडिसा टू ऑस्ट्रेलिया the net based on the network bandwidth right it will take some time तो कौन बफरिंग हबो बहुत टाइम लागिवो the complete document बा कंटेंट ता रीड करियाता so user experience will be very bad जदि तमे स्लो एक्सपीरियंस पाइबो डेफिनेटली यूजर विल गेट फ्रस्ट्रेटेड राइट तो सेति पई कोन करछि ना सब लोकेशन रे कोन करछि ना एड्स लोकेशंस बसे दोछि धर मु ओडिसा रे अछि मोर नियरेस्ट लोकेशन कोन हबो कोलकाता जोटी गोटे एड्स लोकेशन अछि चेन्नई रे तार निजर चेन्नई पाखे दुईटा अच्छी दिल्ली रे दुई पर केरला वाला से कौन करिवे तांकर नियरेस्ट हबो चेन्नई तांकर चेन्नई लोकेशंस आसीबो दिल्ली ऑलरेडी हैज बीन हैविंग द एड्स लोकेशन एड्स लोकेशन कोन हबो ये जो डायरेक्ट हमें कनेक्ट करूची राइट तो एठी जो एड्स लोकेशंस बसिला राइट एठी ये जो कस्टमर यूज कर से माने कोन करछ ना से एड्स लोकेशन रु कंटेंट आणुचंती ना कि डायरेक्टली फ्रॉम द सर्वर फ्रॉम दैट रीजन तो कोन होछ ना जेतले फर्स्ट कंटेंट जने सपोज ओडिसा रो गोटे लोक गोटे धर गोटे कंटेंट सपोज ओडिसा रो गोटे लोक गोटे कंटेंट रीड कला से कंटेंट ता कोन होबा ना नियरेस्ट लोकेशंस जोटा कि अछि हमर एड्स लोकेशंस सेठी स्टोर हे गला कॉपी गोटे कैश रे मेमोरी स्टोर हे गला तो से लोग आउ गोटे कस्टमर जदी सेटा को से सेम कंटेंट चाहूची तो सेम कंटेंट से एठू न आसी कोड आसीबो एठू आसीबो नियरेस्ट एड्ज लोकेशन रु आसीबो तो एटा कोन हेगला फास्टर हेगला राइट तो विल गेट यूजर एक्सपीरियंस वेरी फास्टर तो सेते पे एड्ज लोकेशंस डिफरेंट लोकेशन रे रखुची बुझी पालो एड्ज लोकेशन रे काम कोन गोटे एग्जांपल दियो मते एते बुझी सालन तो मते हुए तो तम माइंड रे आसी जाय तो गोटे एग्जांपल दियो ये कहबो गोटे एग्जांपल दियो मते anyone can tell me what could be the example for this best example हम डे टू डे सब बळे यूज करछो ना माइंड रे आसुनी तो हमें समस्त नेटफ्लिक्स यूज करछे ना नहीं प्राइम वीडियो नेटफ्लिक्स तो नेटफ्लिक्स ता सर्वर रखी ची कोठी इंडिया तो नहीं मैं भी थाई पारे कोठी बट एटलीस्ट ओडिसा तो नहीं राइट तो नेटफ्लिक्स सपोज तार सर्वर यूएस रे रखी ची तो हमें जदी गोटे वीडियो गोटे इंग्लिश मूवी हमें देखिबा कोई कोनसी मूवी देखिबा गोटे राइट तो से मूवीटा कोन से सर्वर रु हम पाकु आसीबा पई तो कोन हो obviously it will take some time right buffering network आजकल तो 5G 5G स्पीड रे आसु हमें बहुत जल्दी देखि दोचे think about just go behind 15 years before but 2G रे थिले तो सेतबले गोटे मूवी देखिला केते डिफिकल्ट थिला राइट सेतबले एबं एड्स लोकेशन भी कोन कैसे भी कोन जानि नतले हो भी नथिला तो गोटे मूवी देखियाबो इवन आई रिमेंबर in my college days right when we were watching movies even there were 2G 2G was introduced maybe that time data was introduced that time maybe when we are looking that movie it was taking hours of time किछि बाट बफरिंग हबो बफरिंग बुलतो बुलसला परे मूवी अल्प लोड हबो 5 मिनिट लोड हबो 5 मिनिट हम देखि दो पुनी लोड हबो पुनी मूवी बफरिंग करिवो राइट तो ये सब टाइप रो चलतला वर्तमान नेटफ्लिक्स से कोन हम इमीडिएटली विद इन जस्ट फिंगर क्लिक वी आर सीइंग वाचिंग द मूवीज राइट तो केमते होउची तो नेटफ्लिक्स
would have kept these locations nearest to us. The movies will get casted to nearest locations and we can easily watch these movies very fast. Right? Perfect. Okay, that's all guys. Jaha bhi mu ame padhile aji, right? এই ସବୁ ବିଷୟରେ ଡିଟେଲ୍ସ ରେ ଏଡ୍ଜ ଲୋକେସନ୍ସ ରାଇଟ୍ ଆମେ ଆଉ କଣ ଜାଣିଲେ ଡାଟା ସେଣ୍ଟର ଆଭେଲେବିଲିଟି ଜୋନ୍ ରାଇଟ୍ ରିଜିୟନ ହେଲା କଣ a region consists of multiple isolated physically separated availability zones और ଆମେ ଯଦି ସିମ୍ପଲ ଭାଷାରେ କହିବା region ହଉଛି ଗୋଟେ किंवा multiple availability zone it holds one or multiple availability zone तो availability zone कौन availability zone holds one or multiple data center simple so availability zone is the subset of region and data center is the subset of availability zone ଯେମିତି କି ମୁଁ ଗୋଟେ ଏକ୍ସାମ୍ପଲ ଯେତେବେଳେ ବତେଇଥିଲି ଯଦି ଏଇଟା region ହେଲା ଏଇଟା ହେଲା availability zone right availability zone ଭିତରେ ଆମର data center ରହୁଛି data center ରହିଲା right ଏଇଟା region so availability zone AG ଏଇଟା ଆମର simple data center ବୁଝିଲ अच्छा सचिन मते कहलो AWS केते मंथ्स फ्री दउची फ्री टियर केते मंथ्स दउची सचिन AWS फ्री टियर केते मंथ्स दउची अनुपम 1 year 1 year 12 but months right it provides 12 months of free tier we can use freely the services for 12 months right इस क्वेश्चंस जहां भी मुझे पढ़े डेफिनेटली काली पचारिबी तमे यदि मते सैटिस्फैक्टरी आंसर देला देन मूव करिया नले मूव करी किसी लाभ ही नहीं पढ़ी चलतीबी तमे खाली सुनी चलीथियो बट एट द एंड nothing will happen so there is one doubt yeah sure can you go to that slide edge slide edge location right yes edge locations okay yes so my doubt is like whenever we are accessing from when the edge location so the data exactly like is stored in the size of the data exactly stored in the edge location or the I mean there is some type of link to that region perfect nice questions yeah see actual data will be stored in the region where the actual server will be there so here the content will be available but here just copies means it's just cache kind of a small cache memory it will take it's yes. Copies will be stored here sometimes we have to delete this cache तो हमें देखुथिबे हमें तले कंप्यूटर राइट हम विंडोज लैपटॉप जतले यूज करूचे किछि टेम्पररी फाइल रहि जाय किबा हमें जतले क्रोम यूज करूचे फर्स्ट टाइम हमें जदी कोनसी गोटे वेबसाइट ओपन करथियो देखिथिबो सेटा टिके टाइम ने लोड होबा पई बट नेक्स्ट टाइम हमें तो सेही वेबसाइट ओपन करे पटकिन ओपन हे जो केमती यस कैसे कॉपीज ता कैसे रे स्टोर ही थाए राइट yes तो सेटा हम ओपन है सिमिलर कांसेप्ट हियर okay yes got it बुझ पालो yes good so next class to हमें कौन करबा जो सर्विस हमें जो पढ़िबा फर्स्ट हमें कौन करबा सिक्योरिटी सर्विस ऊपर फोकस करबा जोटा कि हम फर्स्ट सर्विस हबो IAM ओके देन नेक्स्ट सर्विस हमें जिबा स्टोरेज ऊपर S3 तापर हमें जिबा EC2 जोटा कि हमर वर्चुअल मशीन्स क्रिएट कराओ VM बा वर्चुअल machine क्रिएशंस
तमे ए फेज रे जीवा tomorrow classes will learn this one, next will learn this one, next will learn this one. Okay, এই তিনটা আমি পড়ি সারলা পরে নেক্সট মুভ করিবা আমার লাইনক্স কু লাইনক্স আউ সেল স্ক্রিপ্টিং राइट तो जमा क्लास मिस करिवनी कंटिन्यू क्लास चलिबो वर्तमान बट से हिसाब रे तुम माने भी प्रैक्टिस करि चलो मु क्वेश्चंस डेफिनेटली कली पचार जहाँ भी आज पढ़ले तो आज वीडियो लिंक मु शेयर कर देबी तमरो जो एप्लीकेशन एक्सेस देछि ताते शेयर कर देबी ठीक है जी that's all guys for today's class see you tomorrow okay चलो बाय बाय अब डाउट सब रेडी कर रखी था मुझे डाउट पचारियो अच्छा